An American student held in a North Korean prison is back on American soil. Otto Warmbier was convicted in March 2016 for allegedly committing anti-state activity. His punishment? 15 years hard labor. But in a dramatic move, the regime released Warmbier on Tuesday. Tragically, his parents recently discovered that he'd been in a coma for almost a year. You can see him moved into the hospital. His nightmare started in March 2016 when North Korea says they caught the 22-year-old trying to steal a propaganda poster from the hotel he was staying at while on a tour of the reclusive nation. A security camera allegedly caught Warmbier in the act. He was arrested and weeks later brought to North Korea's Supreme Court, where he pleaded for mercy. Please, I have made the worst mistake of my life, but please, act to save me. But the judge showed no mercy. In a trial that lasted just 1 hour, the native of Ohio was convicted and sentenced to 15 years hard labor. Please save my life. Please think of my family. For this perfect murder, everything points to North Korea, which is one of the only countries to possess the VX poison. The 4 men who were watching the scene managed to get away, but the 2 women who carried out the attack were arrested. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे से हो गए। आ गया एक नई वीडियो लेके, और ये वाला जो रूम है मैं आज छोड़ रहा हूँ यहाँ से। ये देखो पूरा खाली वाली हो गया अपना, और मैं भी जाने वाला हूँ यहाँ से दूसरे लोकेशन में, म्योंगडोंग में। तो मैंने वहाँ पे रूम वगैरह बुक कर लिया है। और एक चीज़ आपको बताना था कि यहाँ पे बोलते हैं ना कि कोरिया में एकदम फास्टेस्ट इंटरनेट होता है, तो देख लो उसके कितनी स्पीड होती है। यहाँ पे मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ डाउनलोड, तो देखो कितने जल्दी ये डाउनलोड हो जाता है। ये देखो स्पीड क्या खतरनाक है, देखो। अरे यार बाप रे, इतनी जल्दी नेटफ्लिक्स में एक सीरीज़ पूरी डाउनलोड हो गई। कितने सेकंड लगेगा आपने तो देखा ही होगा। तो आज मैं ऐसे निकलने वाला हूँ DMZ, जो है बोलते हैं डीमटेरियलाइज्ड जोन, जो एकदम नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर होता है। तो एकदम खतरनाक वीडियो होने वाली ये वाली। सबसे पहले अपना बैग निकाल के वहाँ पे रखते हैं, हो सकता है गाड़ी में रखूँगा तो रूम में रखूँगा। तो चलो यहाँ से निकलते हैं अभी, और ये वीडियो को पूरी स्किप नहीं करना, पूरी देखना। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में। लेट्स एंजॉय द वीडियो। बाय बाय रूम। देखो भाई कैसा रास्ता है, देख लो यार। ये ऐसे रास्ते पे से मैं इधर आया हुआ था, एकदम खतरनाक रोड है यार। ये एक चर्च है सुवॉन स्टेशन के जस्ट पास में ही है। तो उतर गया अभी मैं होंगकिक यूनिवर्सिटी स्टेशन पे, और बाहर है हमारी बस। तो चलते हैं अभी बाहर। इधर ना हर एक स्टेशन में ना जापान जैसा दिया हुआ। यहाँ पर आप देखो अपना लगेज वगैरह जैसा मेरा है ना, ये रख सकते हैं 1000 वोंग देके। और ऐसे टाइप के लॉकर्स होते हैं देखो। और वहाँ उस तरफ भी स्टेशन में बने हुए थे, तो वहाँ पर भी ना ऐसे छोटे छोटे लॉकर्स है। तो मतलब जिम में कैसे लॉकर रहते वैसा, वो बस है कि टी मनी ऐप डाउनलोड करो अपना, और उसके बाद में रजिस्टर वगैरह करना पड़ता है। वैसा कुछ प्रोसीजर है इसका। ऐसा हाँप रहा हूँ मैं क्योंकि ना मेरे पास एकदम हैवी सूटकेस है, और मैं ना एकदम स्टीप वाली रोड थी ना ऊपर आते हुए वैसे, तो उस पर से वो सूटकेस लेके आया और डायरेक्ट मैंने लॉकर देखा, तो मैंने वो वीडियो ले लिया आप लोग को बताने के लिए। तो बस में आकर बैठ गए। देखो ऐसी लग्जरी बस है, एकदम गजब वाली, AC चिल्ड। सबको सीट बेल्ट पहनने के लिए बोल दिया, क्योंकि ना 50 किलोमीटर दूर जाने वाले भगाते हुए। Today's tickets. I need your information. So the person who take this bus at here, the Hongik University. So please fill out this one. Just a name and date of birth and contact number, the phone number. So when you write down your name on here, please write down official the passport name and no new name. And when you write down your birthday, so please write down year, month, day. अभी ना हमको ये ID ऐसा वाला दे दिया है कि पहचान में आए कि हम टीम नैन्सी से, ऐसा हमको हमारी जो गाइड है ना उसने बताइए। और यहाँ पर पासपोर्ट चेक करेगा, बहुत स्ट्रिक्ट है, तो सबका पासपोर्ट अपने हाथ में रखने के लिए बोला गया है। तो मैं भी अपना पासपोर्ट निकाल के रखता हूँ, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट ना नॉर्थ कोरिया में एंटर होने वाले हैं। तो ये रहा मेरा भारतीय पासपोर्ट। तो ये अभी बस से हम उतरे हैं
अभी हम लोग DMZ के यहाँ उतरे, तो अभी यहाँ पे थोड़ा स्नैक्स वगैरह के लिए रुका गया। तो हमारी टूर गाइड ने ना अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दी कि कैसे ये बॉर्डर DMZ वगैरह बना है। यहाँ पे टिकट काउंटर वगैरह दिया है और टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन है, और इस तरफ पे वॉशरूम दिया हुआ है। इधर भी उन लोग जापान जैसा फॉलो करते हैं। मेरे को मोस्टली चीज़ें वैसे ही देखने को मिली। जैसे मुझे अभी ये प्लास्टिक की बॉटल फेंकना था, मैं ढूंढ कर आया हूँ। यहाँ पे प्लास्टिक ये सब अलग अलग फेंकते हैं, तो मैं भी प्लास्टिक में इसको फेंकूँगा। वैसे प्लास्टिक है तो अलग ही फेंकना है हर एक चीज़। ये भी हमको ऊपर ले जा रही है यहाँ से, हमारी टूर गाइड है नैन्सी। Asian line, the 2 kilometers to the south, we had a third limited line of the DMZ. And from this line, the 5 kilometers to the south, we have a one more line, this civilian access control line. So from this wire fence, normal civilian like me or you, we cannot over from this wire fence. Only military soldier can over from this wire fence. That's why we call here at the end of South Korea to the northern direction. So that's why the dispersed family, when they missing their family, they just come to here because they can access to this area to watching to the northern direction. At here, so you can see the gondola, right? So after look around this area, the Injingak Park, if you wanna take the gondola, this one, so let me help you. Your ticketing to get the discount, the 20% off. So if you take the gondola, take here and over the civilian access control line, and you can get off. And you can see the orange loop tile over there, right? This is a Camp Garibus, the U.S. Army base. But few years ago, the U.S. they rent mine already. Here is all the rent mine area. So only small area we remove the lens mine and people can take. So there is a photo shot, so you can take picture with the signboard of the lens mine. Let me show you later. My photo. So. The round trip is around 15 minutes gondola, and you can stay inside over there around 30 minutes like this. So totally of less 1 hour stay time. And after Imjingak Park, then I will have you. So let's. For their hometown. So this first family, so usually the old generation, the war generation, when they missing their family, they just come to here. And when they come here, they bring some food or fruit and put on the table over there and bow down to the northern direction. And sometimes they do the ritual ceremony for their parents or the ancestor in North Korea. Especially the 2 times a year, the Lunar New Year's Day and Thanksgiving Day in Korea, here is a really long queue to wait their turn to the ritual ceremony. And after the bow down and they cry here. So this place is a very sad place for the old generation. By this railway, but during the Korean War, because Japan, during the colonial period, the Japan installed this railway to take the resources from the peninsula to bring to Japan. But during the Korean War, the North Korea military troops, they carrying so many weapons from the Soviet Union, the China, and pass through North Korea and bring to here using this railway. So UN forces to make them block, destroy, bomb this railway. So after the Korean War, no more connected. So we keep only small part of the original railway that's here. So all the wooden part, you can see the name of the city located in North Korea used to connect it before the Korean War. Name of the city and how far from here. This is kind of the heritage for us, connected before. Amidst this agreement, we built 2 temporary bridges to exchange the POW, the prisoner of war. So this bridge is just for one way. So this bridge is for from the North Korea and come to South Korea. So using this bridge, the 12,773 POW cross the bridge and come to South Korea. That's why we call this one Freedom Bridge. But the other one, from the south to the north, we call the no return bridge of the no return, because after people decided to go to north, after that they never come back again. So we call the no return bridge. But the other one is located in JSA, the Joint Security Area. So have you heard about the guy who went to the North Korea? So after that, the JSA is completely
shut down the close, so nobody access over there. So 2 days of this tour, we cannot see the no return bridge. We can see only this one, the Freedom Bridge. So after explanation, if you want, you can look around and take pictures. And if you go down this way, you can see the full view of this bridge. So at the first of all, let me explain all first. After that, I will give you the free time and you can look around freely. Okay? So Team Nancy, please come close to me here. You can see the older train, the locomotive right here. This is the original train that runs from the North Korea. As I told you before the Korean War, we were all connected by the railway. But using this, it was the cargo train. So using this one, the North Korea, the military troops, they carrying so many weapons. So to prevent them, the UN forces, they shoot. So stop here, and you can see the so many bullet holes up here. So it shows the pain of the Korean War. Of course, you can take picture later. And next here, you can see the barbed wire. This is the same one, the civilian access control line. So after from this wire fence, people cannot over. Over there is a small military guard post, right? Inside, the South Korean military soldier inside, and using the binocular, he watching to the northern direction. Here. ये जो आप शॉप देख रहे हो ना, इसमें ना नॉर्थ कोरिया की करेंसी सेल कर रहे हैं। मतलब इनकी जो नॉर्थ कोरिया की लार्जेस्ट करेंसी की नोट है ना, वो है 5000 वोंग की। और वो 70 साल में ना नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी ऐसी डाउन हो गई है, साउथ कोरिया की ऐसी अप हो गई है कि अगर 5000 जो लास्ट करेंसी की नोट है ना, नॉर्थ कोरिया वाली, अगर साउथ कोरिया में आओगे तो सिर्फ एक कॉफ़ी खरीद सकते हो, सोचो। और वो 5000 सिर्फ वहाँ पे एक बंदे की सैलरी होती है नॉर्थ कोरिया में, ऐसा हमारी टूर गाइड बता रही थी। और यहाँ पे एक एक नोट है ना, 5000, 2000, मतलब 1000 के जो नोट है ना नॉर्थ कोरिया के करेंसी के, वो प्लास्टिक में पैक थे। जैसे मैं आपको स्क्रीन में बता देता हूँ, मैंने चुपके से लिया, वैसे मना किया था लेने के लिए वीडियो। तो वो ना यहाँ पर बेच रहे हैं लोग 22 हज़ार साउथ कोरियन वॉन में। और ये जो शॉप ओन करती है ना यहाँ पर, वो नॉर्थ कोरियन बंदी की है। तो मतलब बस सोच सकते हैं इतना एक्सपेंसिव लोग सिर्फ करेंसी सेल कर रहे हैं। अभी हम जाने वाले गंडोला, जो केबल कार है ना, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, एंट्री लिए थे, तो उसमें जा रहे। डिस्काउंट के बाद ये बता रही है हमारी जो टूर गाइड है, वो $6 एक जन का है। तो चलो देखते हैं, आपको वो भी राइड बता देते हैं इस वीडियो में। तो ये हमारी टिकट, और यहाँ पर है केबल कार। ये तो सेम मेरे को ना अजरबैजान का बाकू जैसा लग रहा है। यहाँ पे ना ऑब्जर्वेटरी डेक है, यहाँ पे ऊपर जाते हैं और दिखाते हैं आपको। वैसे ना अभी जब वो केबल कार से आ रहा था ना, तो बता रहा था 20 किलोमीटर यहाँ से प्योंगयांग, जो अपना नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है। तो यहाँ से ना सब पास होते थे पहले, जब सिविलियंस जो लोग हैं ना, पहले यहाँ से और वहाँ अप डाउन करते थे। ये जो ब्रिज आपने पिछले क्लिप में देखा ना, ये वापस से देख लो। यहाँ पर ना सब लोग ने ना ऐसा मैसेजेस वगैरह लिखे हुए, मतलब पीस बताने के लिए कि हम तुमको मिस करते हैं, हम तुम्हारे साथ में रहना चाहते हैं, ऐसा सब ना इन लोग अपना मैसेज लिखे हुए हैं नॉर्थ कोरिया में, जो डाइवर्ट हो गए थे ना, और साउथ कोरिया में।
तो उन लोग यहाँ पे मैसेज लिख के ना ऐसा रिबन बांध के चले गए हैं। तो ये भी एक ऐसा सैड मोमेंट ही होगा ना कि इन लोग एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते। मतलब सोचो कि इज़राइल और फ़लस्तीन में कैसा इधर उधर लोग हो चुके हैं तो मिल नहीं पाते, वैसे इन लोग का भी। लेकिन इन लोग ज़्यादा ही कुछ स्ट्रिक्ट है, मतलब सोच सकते हो कि इंटरनेट वगैरह नहीं है, डिक्टेटरशिप बहुत है, तो कितना इन लोग को पेन होता होगा कि अपने फैमिली मेम्बर्स को ही आप नहीं मिल सकते हो। और ये आ गए हम ऑब्जर्वेटरी डेक की तरफ। ये देखो यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है। ये उस तरफ का एरिया है पूरा साउथ कोरिया का, और ये वाला है पूरा एरिया इस तरफ का नॉर्थ कोरिया का। ये ना पूरा एरिया है ना पूरा कवर्ड है देखो मिलिट्री जोन से। तो ये देखो पूरे तार वगैरह लगे, और एक ऐसी स्टीप रोड है देखो, यहाँ से आया हूँ ऐसा चढ़ के, बहुत ख़तरनाक है यार ये। अच्छा है मिलिट्री जोन है, देखो सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, चिल विल मार रहे। ये पूरे यूएस मिलिट्री बेस का एरिया है यहाँ पर। ये अपने को चेक पोस्ट पे लेके जाएगा, वहाँ पे अपना ये पासपोर्ट चेक करने वाला है। तो अपने को ये बंदी ने पहले ही बता दिए कि पहला पेज निकाल के रखना, और कुछ भी रहेगा तो कैप है भी सब चीज़ निकाल के रखना। मतलब इन लोग बहुत स्ट्रिक्ट है, समझ गए हो ना। To memory back in 1998. So now we are heading to the third infiltration tunnel. Back in 1998, when we do the sunshine policy to the north, so more than 800 South Korean company, we built our factory in North Korea in Kaesong City, the third largest city in North Korea. So we installed the railway here, and inside the Kaesong industrial complex, so many the South Korean factories there, and we hired the North Korean people as. This is a unification village. So one of the DMG village. You asked me the secret village. We can say because not official name is a secret village. Unification village. The DMG people live over there. So on the ground of the Korean Peninsula, we had a plenty of the water. So everywhere when you dig in the ground, water came out. No water came out. So South Korea government, we are PLC. तो भाई उतर गए हम DMZ के मेन जगह पर। 1950, the invasion of South Korea by the North began with earth-shattering sounds of artillery. Although North and South Korea established their own governments after World War II, the peace didn't last long. Revealing its ambition to conquer South Korea, North Korea started the Korean War in alliance with the Soviet Union. Turned the entire nation to ruins, resulting in over 3.9 million deaths. This war among Koreans was a true tragedy. After 3 years and 1 month, the Korean War ended with the Armistice Agreement signed in Panmunjom on July 27, 1953. It led to the formation of the DMZ around the military demarcation line to prevent the war from starting again. On November 15, 1974, an underground tunnel was discovered 1.2 kilometers south of the demarcation line, which is... We have started for temple because we built this building to sign the peace treaty. But until today, so we couldn't sign the peace treaty, so still we use this temple building. So when we held the summit between the two Korea, two summit meet here, T2 building. So inside of this building, two summit and interpreter only come inside, and other staff officer they stand by here, T1 and T3. So like this, you can check the yellow mark inside the tunnel, all dynamic tools heading to the south. And you can check black charcoal powder painted on the wall. And like this, when North Korea digging the tunnels, they use only human's work. No machine, no technology, only small dynamite. So it was very hard. The place, the Jimjinga Park ticket place was here. So we saw the freedom bridge first.
Then we cross the unification bridge at the checkpoint known as a car bridge, right? And cross the bridge and we pass by the unification village on our the left side, right? Then now this is a Dorasan train station. Then now we are here. So from here, after that, when you go outside, you will go into the intersection tunnel. It means now we are here. Look, technically, we are not DMZ, right? So now we are here. Now we are here. This is an intersection tunnel built by South Korea, and this is an infiltration tunnel built by North Korea. So at the first time, you will go down here. 11 degree is very steep. So when you're going down, it's very easy. And here is a more than 3 meter high. So very big spaces and down. So very easy. You can go like this. But from still DMZ, but legally from here, the North Korea territory. So in front of the MDL, the South Korea government, we built 3 concrete barricades to make block. So even you enter the tunnel, so you can go only till here. Go and return back. So you will use the same way. अभी हम लोग को टनल में लेकर जाएगी तो लॉकर के अंदर सब चीज़ सामान रखना पे बहुत स्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के रूल्स के हिसाब से अंदर लेके जाने नहीं देगा। तो पानी और ये हर चीज़ फ़ोन वगैरह सब रखना, सिर्फ वॉच पहन के जाना है। ये रहा अपना लॉकर, इसके अंदर हम लोग सब सामान रखने वाले, एक एक का लॉकर दे दिया गया है। बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। भाई ये क्या खतरनाक टनल था यार, 225 मीटर का टनल था और ये नीचे से ना ऐसा करके स्टीप है और वापस से आओगे ना तो ऊपर है। तो इसमें से ना 3 टनल दिखते हैं, मतलब अंदर से जाओगे ना तो ना 170 मीटर पे ना आपको नॉर्थ कोरिया का। तो मैंने अभी कुछ ले लिया सोवेनियर्स और मुझे पड़े कुछ ये 800-900 में 2 आइटम पड़े। की चेन लिया और एक पूरा सेट ऐसा वाला वो मैग्नेट वाला होता है। अभी DMZ लिखा है, यहाँ पे भी सबकी फ़ोटोग्राफी चालू है। मस्त स्प्रे आ रहा है यार, ये ठंडा ठंडा पानी का, एकदम जैसा मक्का में हरम शरीफ में आता ना वैसे टाइप का लग रहा है एकदम। एक नंबर। देखो स्प्रे, मैंने स्लो मो भी लिया है। अब इधर देखो वाह, ये मेरे को ब्लू माउंटेन्स ऑस्ट्रेलिया के जैसा थोड़ा थोड़ा वाइब्स दे रहा है। ये देखो यहाँ पे पूरे ब्लू कलर का ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जो बाइनोक्यूलर है ना, इसमें से आप देखोगे ना उस तरफ पूरा नॉर्थ कोरिया दिखाई देता है। यहाँ से मैंने अभी इसमें से फ्लैग भी देखा नॉर्थ कोरिया का। तो अभी ऑफिशियली मैं एकदम बॉर्डर पे आ गया हूँ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के। और आप ये देख सकते हो व्यू, यहाँ पर ये पूरे फेंसेस लगे हुए ये वाले एरिया में यहाँ पर, और ये पूरा एरिया है साउथ कोरिया का और ये वाला एरिया है पूरा नॉर्थ कोरिया का। आपको जूम करके बता देता हूँ, यहाँ पे फ्लैग है साउथ कोरिया, ये है नॉर्थ कोरिया का। अब देखो आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पर ये वाइट और ये जो फ्लैग बना हुआ है ये है साउथ कोरिया का, और रेड के अंदर ये ब्लू है, ये वाला पॉइंटेड है, इसमें है नॉर्थ कोरिया का फ्लैग। तो ओवरऑल बोल सकते हैं ये बाउंड्री बनी हुई है, ये लेफ़्ट साइड में नॉर्थ कोरिया, राइट साइड में साउथ कोरिया। मतलब आप सोचो यार कि यहाँ पे साउथ कोरिया कितना डेवलप्ड कंट्री है और ये फेंस के बाजू में जो लेफ़्ट साइड में नॉर्थ कोरिया है कितना आइसोलेटेड है, दुनिया से हट के पूरा रह रहा है। मतलब जिसको किसी दुनिया से परवाह ही नहीं है और ना इंटरनेट टीवी कुछ भी नहीं चलता है। मतलब सोचो 1920 या 1800 या उससे भी पहले ईयर में लोग जी रहे, तो मतलब कुछ भी नहीं है इनके पास। तो हम लोग सब जो टीम जितनी भी आई देखने के लिए, ये देखने के लिए है जैसे बंदर वगैरह को किसी को जू में देखने के लिए आते नहीं है पैसा खर्चा करके, वैसे टाइप का सब लोग आए हुए हैं, फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं। और यहाँ पे सब बाइनोक्यूलर से यही देख रहे हैं कि कैसे इन लोग रहते हैं यहाँ पर। ये क्लियर पिक्चर बाद में मैं अपलोड करूँगा, साथ में इसमें चिपका दूँगा वीडियो के, देख लेना। यहाँ पर फ्लैग देख लो, ये फेंसेस।
protected because this area is controlled by the military stuff. So exactly same like an army base camp. Every night 10 p.m. the military soldier they check. अभी हमको ना बस ने यहाँ पे रुकाया हुआ है मिलिट्री बेस के यहाँ ना एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे ना एकदम सस्ते सस्ते प्राइजेस है यहाँ पे ना, मतलब 150 रुपये 100 रुपये के ना ये सब प्राइजेस है। आप देख सकते हो मैंने ये ऑर्डर किया है, ये मैंने ट्राई कर लिया है और ये एक और ट्राई करने वाला हूँ भी, मतलब समझ सकते हो 5,500 5,000 येन का ये सब प्राइजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं येन, तो अच्छा है, ठीक ठाक है, रीज़नेबल है। तो ये आ गया मेरा ऑर्डर ब्लूबेरी स्मूदी, बहुत गजब लग रहा है यार। ये पूरा आप देख सकते हो ना मिलिट्री बेस है और ये खुद ना यहाँ पर सारे चीज़ें ही ना मतलब ग्रो करते हैं, इनका हर चीज़ ऑर्गेनिक यहीं पे मिलता है, इन लोग यहीं पे उगाते हैं फसल वगैरह, और इनको ना एक ही सुपरमार्केट दिया हुआ है जहाँ से इन लोग ख़रीद सकते हैं, बाहर का कोई आ नहीं सकता। और अगर इन लोग को बाहर जाना भी है ना कभी मूवी वगैरह देखने ऐसा, तो इनको ना परमिशन लेके जानी पड़ती है, 10 बजे के पहले इन लोग को आना पड़ेगा वापस अपने मिलिट्री बेस में ऐसा है। और इनका एकदम रहन सहन बिल्कुल भी अलग है, मतलब समझ लो कि पूरा अलग है, दुनिया से हट के रहते हैं इन लोग। और इनका एजुकेशन फैसिलिटी भी यहीं पे दी हुई है और इनका यहाँ पे 44 स्टूडेंट्स है और 11 टीचर है यहाँ पर, और ऐसा इनका सब लाइफस्टाइल चलता है। और यहाँ पे इतना सेफ़ है कि ना फैमिली मेम्बर है ना, मतलब चप्पल वगैरह बाहर रख दिए, गेट खुला रख के सो जाते, कोई चोरी वगैरह का टेंशन है क्योंकि आ ही नहीं सकता कोई, इतना चेक पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन शॉर्ट बोलूँ ना कि सेफ़ ही है समझ लो। और यहाँ पर ना अगर मान लो कोई बंदा ना यहाँ पे मिसिंग हो गया किसी के फैमिली से, तो इन लोग ना यहाँ पे ढूंढने के लिए आ जाएंगे और यहाँ पर ना इन लोग सायरन बजाते बजाते पूरे ना गाड़ी यहाँ पे घूमते रहेगी। वैसे तो होता नहीं, लेकिन अगर इन केस हुआ तो ऐसा हो जाएगा। तो बस ने मुझे उतार दिया म्यांगडोंग में, मैं अभी जा रहा हूँ अपने रूम में सामान वगैरह रखता हूँ, उसके बाद में वापस आऊँगा मैं यहाँ पे कुछ रिसर्च करने के लिए, क्योंकि मैंने सुना बहुत सारे मार्केट वगैरह भी है यहाँ पर और रेस्टोरेंट भी है। तो मैं अभी पहले निकलता अपने रूम के तरफ। तो देखो मेरा ये जो रूम है अभी मैंने लिया हुआ है म्यांगडोंग के पास, कितना ज़बरदस्त है, देखो एंटर करके बताता हूँ आपको। ये देखो कितना मज़ेदार रूम है, 2 बंकर दिया हुआ है और सारी फैसिलिटीज़ है, टीवी है, जैम क्या क्या दिया, देखो यहाँ पर टॉवेल वगैरह है और बाथरूम भी बता देता हूँ आपको। देखो सारी फैसिलिटीज़ है, कंडीशनर, शैम्पू, वाह, दिल्ली का म्यांग वाला टिश्यू पेपर भी है। तो भाई आ गया हूँ मैं अभी अपने नए वाले रूम के अंदर, और आज का तो दिन बहुत ही मज़ेदार था, आपने तो पूरी वीडियो में देख लिया। वो रूम से निकल गया यहाँ पे आया ना म्यांगडोंग में, तो कितना ज़बरदस्त अलग ही वाइब आ रहे हैं मेरे को दिमाग में, ऐसा लग रहा है नाइट वीडियो भी बना दूँ मैं। तो कोशिश करूँगा बनाने के लिए कि नाइट वाली वीडियो भी एक बना कर डालूँ, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा ये वीडियो को क्लोज करने वाले, क्योंकि हो सकता है थोड़ी लंबी होगी तो उसको 2 पार्ट में कर देंगे, अगर नहीं हुई तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी रहेगी, नॉर्थ कोरिया के टूर वाली। तो अगर आपको कुछ नॉलेज वगैरह चाहिए या कुछ भी डिटेल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, और ये रूम के बारे में भी बता दूंगा कि कैसा कहाँ से कितने का लिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई विल बी बैक अगेन विथ मोर वीडियोस लाइक दिस। फॉर द टाइम बिंग बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और चैनल ग्रो होने का सपोर्ट चाहिए आपका। बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं कोई दूसरे वाले वीडियो में। अभी थोड़ी देर के बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करने वाला हूँ, वो हो सकता है नाइट लाइफ वाली हो या कोई और, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।